Assalamu alaikum, dear students. How are you? How is the day today? Hope you are enjoying at your homes. I am your English teacher. We were reading sounds together and we read a sound and a sound, and now we will continue this further. आपने PEG, LEG ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स जिनमें ई आता है बीच में, यानी ए आवाज़ आती है, तो वैसे हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे। आज हम उससे आगे वाले वर्ड्स पढ़ेंगे। HEN hen, HEN hen, HEAD head, HEAD head, LEAD lead, LEAD lead, BREAD bread, BREAD bread, DRESS dress, BREATH breath, BREATH breath, THREAD thread, THREAD thread, GET get, GET get, SET set, SET set, END end, END end, MEN men, MEN men, EGG egg, EGG egg. Good. Now we will repeat these. फिर से दोहराएंगे। HEN hen, HEAD head, LEAD lead, BREAD bread, DRESS dress, BREATH breath, THREAD thread, GET get, SET set, END end, MEN men, EGG egg. गुड। आई होप कि आपको अभी ये स्पेलिंग के साथ पढ़ना आता होगा। चलिए अब हम इसको बिना स्पेलिंग के ही पढ़ते हैं। हैन, हैन, हेड, हेड, लेड, लेड, ब्रेड, ब्रेड, ड्रेस, ड्रेस, breath, breath, thread, thread, get, get, set, set, end, end, men, men, egg, egg. थैंक यू एवरीवन। अब आप यही वर्ड्स घर में फिर से रिपीट करेंगे, स्पेलिंग के साथ भी, स्पेलिंग के बगैर भी, और आई होप कि आप इसको मेमोराइज अच्छे से याद करेंगे, इनकी स्पेलिंग्स। थैंक यू एवरीवन। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।